Hi Tanisha. Uh, did you Hello, watch sir. this lectures? Yes, sir, I did. Yeah. Okay. Any doubts in previous classes or all good? No, sir. Yeah, it's all good. Okay. Okay. Cool. So let's start in 1 minute if no one else joins. All right. Let's start today's topic. So yeah, today we'll be talking about brokers and stock market index and like what who are brokers and types of brokers, and we'll be understanding what are indexes and how they work. Okay. So Uh, would you like to like answer or guess who are brokers and like would you like to add anything from your side? Hmm, No idea, sir. no idea. Okay, I'll start then. A broker is an individual or a firm that acts as an intermediary between two parties. मतलब जब भी दो पार्टीज डील करती है तो ही विल एक्ट एज अ मिडिल मैन. वो ब्रोकर जो रहेगा वो उनको एक पेज पे लाएगा, विल आस्क देम टू सेटल अमंग देमसेल्व्स, उनका बाय सेल के रेट कोट करेगा, विल मेक श्योर कि दोनों का पेमेंट प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड विल फैसिलिटेट ऑल द ट्रांजेक्शंस कि ठीक है भाई सारी मीटिंग सही तरीके से हो गई, सारा पेपर वर्क सही हो गया है एंड दोनों पार्टी सेटिस्फाइड है. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट वी विल रीच आउट टू ब्रोकर इटसेल्फ, and for doing all those stuff he will charge a fee. It could be a nominal fee, and we call that as a brokerage जो fees लेता है. So a broker can also refer to the role of a firm when it acts as an agent for a customer and charges the customer a commission for its services. कि जो भी सर्विसेज वो रेंडर कर रहा है उसके लिए दे विल चार्ज अ लिटिल बिट ऑफ फी. वो फी दो टाइप की हो सकती है. इट कुड बी अ फिक्स्ड फी और इट कुड बी अ वेरिएबल फी. मतलब जब भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके पहले ही ब्रोकर बता देगा कि रमेश सुरेश से अगर कुछ खरीद रहा है तो ही विल टेल रमेश कि आप कुछ भी सेल करो, मैं आपसे 100 रुपीज एज अ फी लूंगा ही लूंगा. या ही विल टेल कि अगर आपका ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपीज का है, अगर आप कुछ भी 1 लाख रुपीज का सेल कर रहे हो तो उसका मैं एक स्पेसिफिक परसेंटेज दूंगा, हो सकता है 1% हो 2% हो. सो ब्रोकरेज कैन बी चार्ज इन टू वेज. ओके. सो एनी डाउट व्हाट इज अ ब्रोकर एंड हाउ ब्रोकरेज वर्क्स? No, sir. Yeah. So yeah, we have two type of brokers. First you will know is real estate brokers, जो आपने सुना ही होगा घर की लैंग्वेज में. Whenever you try to buy a property and stuff, you approach a real estate broker. Then we have stock brokers, जो हमारा आज का प्राइमरी टॉपिक रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ स्टॉक ब्रोकर्स हेल्प अस इन परचेसिंग स्टॉक्स एंड कितने टाइप के स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं. देन वी हैव इंश्योरेंस ब्रोकर्स एंड फॉरेक्स ब्रोकर्स. तो स्टॉक ब्रोकर्स एंड फॉरेक्स ब्रोकर्स आर मोर और लेस सेम ओनली, बट उनको एक अलग से मैंने टॉपिक दिया है क्योंकि थोड़े से स्लाइट चेंजेस करते हैं एंड दे आर गवर्न बाय some other bodies. So जैसे जैसे we'll go ahead, we'll get to know about them. So let's start with real estate brokers. So real estate brokers वो होते हैं जो जिनके पास लाइसेंस होता है टू डील इन प्रॉपर्टीज. जब भी किसी दो इंडिविजुअल या फर्म्स को कुछ प्रॉपर्टी के में डीलिंग करना हो, जैसे घर हो गया, प्लॉट हो गया, बिल्डिंग के फ्लैट्स हो गए या एनी अदर थिंग रिलेटेड, दे विल अप्रोच अ रियल एस्टेट ब्रोकर. So anyone can be real estate broker. Basically, you don't need any specific educational qualification for that. You just need to clear a exam from RERA. RERA is a real estate regulation act, जहाँ पर गवर्नमेंट ने बॉडी बना के रखी है कि अगर रियल एस्टेट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यू गो टू द रेरा. जैसे स्टॉक मार्केट के लिए वी हैव सेबी, फॉर रियल एस्टेट वी हैव रेरा. एंड वहां पर जाके यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एज अ ब्रोकर एंड आप जाके बाय एंड सेल करवा सकते हो.
तो रियल एस्टेट जो ब्रोकरेज रहती है वो भी सिमिलरली चार्ज होती है कि जब भी कोई बाय या सेल होता है, जैसे प्लॉट सेल हो रहा है, अगर 1 करोड़ में सेल हो रहा है तो रियल एस्टेट ब्रोकर ऑलरेडी अपनी फीस बता देगा पहले से कि जो भी प्रॉपर्टी रहेगी उसका 1% मैं चार्ज करूंगा, एंड दैट विल बी द रियल एस्टेट ब्रोकरेज। यूजुअली इनकी ब्रोकरेज 1 या 2% नहीं रहती, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहती है। एंड दे डू नॉट चार्ज फिक्स अमाउंट, जो फिक्स वाले रहते हैं वो उसके लिए रहेंगे। अगर आपको कुछ रेंट पे चाहिए एंड यू आर अप्रोचिंग अ ब्रोकर, लाइक मुझे एक हॉस्टल रेंट पे चाहिए या पीजी रेंट पे चाहिए, तो आप उसमें 1 मंथ की फी हो गई या इस टाइप का कुछ, दे विल चार्ज। ओके, so let's read. An individual who has earned a professional license to serve as a middleman in selling, purchasing, and renting real estate, such as homes and building, is referred to a real estate broker. जैसा कि मैंने बताया कि प्रोफेशनल लाइसेंस चाहिए एंड एक्ट्स एज अ मिडिलमैन इन व्हाट थिंग्स, इन सेलिंग, परचेसिंग एंड रेंटिंग रियल एस्टेट। कुछ भी हो सकती है वो, कमर्शियल प्रॉपर्टी लाइक ऑफिस, शॉप, और अ पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक हाउस। Purchasing and renting real estate such as homes and building is referred to as a real estate broker. Real estate brokers work toward finding the perfect real estate for you. They will look for multiple houses keeping in mind your requirement, preference and budget. तो आप जब भी इस रियल एस्टेट ब्रोकर को अप्रोच करोगे तो आपको कुछ कुछ चीजें बताना पड़ेगी। लाइक रियल एस्टेट मार्केट इज अ वेरी ब्रॉडर रेंज, जहाँ पर ब्राउजिंग इज वेरी डिफिकल्ट, आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते हो। तो 99% ऑफ टाइम जब भी आपको कुछ रियल एस्टेट में ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा तो यू विल रिक्वायर अ ब्रोकर, एंड आप उसको बता दो कि आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, लाइक व्हाट इज योर बजट, कि आप इतने स्क्वायर फीट से ज्यादा का रेट का नहीं देख रहे हो, एंड व्हाट इज योर प्रेफरेंस, कि मुझे सी फेसिंग चाहिए, मुझे बैंक के पास चाहिए, मुझे टेम्पल के पास चाहिए, एनी प्रेफरेंस विल वर्क। एंड या, and apart from finding the property, they also assist in legal contracts and transportation at times. So what will they will do is कि अगर आपको when आपकी कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो जाती है तो देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस एज वेल, लाइक व्हाट विल बी द पेमेंट मोड एंड पेमेंट कब कब होगा, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आप कैसे लोन लोगे। सो इन ऑल दोस थिंग्स आल्सो समटाइम रियल एस्टेट ब्रोकर्स आर हेल्पफुल, दे विल हेल्प यू इन रीचिंग आउट टू देम कि बैंक से बात करवा दी कि आप लोन ले लो, और दे विल टेक यू टू एन एडवोकेट जो आपको हेल्प करेगा एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने में रिगार्डिंग द सेम। एंड समटाइम्स इन ट्रांसपोर्टेशन एज वेल, कि अगर आपने कुछ रेंट पे लिया है या आपने घर खरीद लिया है एंड आपको सारा सामान शिफ्ट करना है, तो उनके कॉन्टेक्ट में दे कैन हेल्प यू विद पैकेजेस एंड मूवर्स, पैकर्स एंड मूवर्स, तो you can move on easily. So this was all about real estate brokers. So real estate brokers में भी दो टाइप के brokers you will see. One is online brokerage houses and then we have offline brokerage houses. So online में you must have seen advertisements like Magic Break, 99acre.com. So ये सब online brokers हैं जो attractive offers देते हैं, एंड आप इजीली अपनी प्रॉपर्टी वहां पर लिफ्ट कर सकते हो, लाइक आपको कुछ भी बाय सेल करना है तो इट इज अ बिट ऑफ मोर कन्वीनियंट थिंग। एंड देन वी हैव ऑफलाइन ब्रोकर्स, यहाँ पे बहुत स्कैटर्ड मार्केट है, लाइक इन एवरी वन और टू स्ट्रीट यू विल गेट वन ऑफलाइन रियल एस्टेट ब्रोकर, करेक्ट। लाइक कोई पान की दुकान पे मिल जाएगा, और एट अ बार्बर शॉप यू विल गेट सम ब्रोकर, एंड बहुत स्कैटर्ड मार्केट है, एंड दे विल नॉट सो मच रेगुलेटेड कि कोई भी आपको कुछ रेट बता रहा है, सम आर टेलिंग रेट्स जो कि बड़ा चढ़ा के हैं थोड़ा सा। सो दिस आर टू टाइप ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकर्स। एनी डाउट्स इन रियल एस्टेट ब्रोकर्स? ऑल गुड, ओके ओके। सो देन वी नेक्स्ट वी हैव इज स्टॉक ब्रोकर्स। तो सिमिलरली जैसे अगर आपको प्रॉपर्टी बाय सेल करनी है तो आप रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जाते हो, बट अगर आपको स्टॉक बाय करना है या सेल करना है तो आप स्टॉक ब्रोकर के पास जाओगे। तो स्टॉक ब्रोकर्स आर लाइसेंस इंटरमीडिएटरीज, मतलब जो लाइसेंस मिडिल मैन है, affiliated by particular stock exchange in the country who perform trading on behalf of the investors। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी स्टॉक ब्रोकर है उनको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा किस किस से, इधर ऑफ द ब्रोकर लाइक बीएससी और एनएससी, बट 99% ब्रोकर्स के पास दोनों का रजिस्ट्रेशन होगा। एंड दे नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम सेबी एज वेल, सेबी से भी आपको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस व्हिच ब्रोकर्स नीड टू फॉलो। देयर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस व्हिच ब्रोकर्स नीड टू फॉलो, लाइक मेंटेनिंग मार्जिन, कि आपके पास इतने रुपीस होने चाहिए अगर आपके क्लाइंट ने अचानक से सेल करने के लिए मांगा, एंड
आपको काउंटर पार्टी से पैसे नहीं मिले हैं एंड सो ऑन. सो like stockbrokers are also divided into two. We have first is full service broker, or we can say them as traditional brokers. Then we have discount brokers, जो कि बोल सकते हैं हम new generation brokers. So any doubt in definition of stock brokers? All clear? Okay. Cool. Yeah. So उनको दो में डिवाइड करा है. फर्स्ट इज फुल सर्विस ब्रोकर और वी कैन से ट्रेडिशनल ब्रोकर. तो जो फुल सर्विस ब्रोकर रहते हैं, दे आर ऑल इन वन पैकेज ब्रोकर. लाइक विल रीड एंड आई एक्सप्लेन. फुल सर्विस और ट्रेडिशनल brokers serve an all-in-one deal when it comes to trading in the securities market. In addition to providing a platform to trade, they act as a personal financial advisor and consultant. सो जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं ना, वो एक ऑल इन वन पैकेज ऑफर करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू ट्रेड, मतलब ट्रेडिंग तो नए ब्रोकर्स भी ऑफर करते हैं कि आप यू कैन ट्रेड ऑन आवर एप्लीकेशंस. दे ऑफर एडिशनल बंडल्ड सर्विसेज की जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स रहेंगे उनके पास बहुत सारे रजिस्टर्ड एनालिस्ट रहेंगे, रिसर्च एनालिस्ट, जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, जस्ट इन केस इफ यू आर न्यू इन द स्टॉक मार्केट. तो यू माइट एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स कि यार मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या खरीदना है. तो go to the full service brokers and they will help you with calls like buy Tata Motors, buy Reliance, sell HDFC Bank. They will tell you all type of tips. And second advantage of full service broker is कि you will always have a person to communicate. Like they will have a back end office at in every city. Like all सारी बड़ी cities में उनका एक ना एक ऑफिस रहेगा जहाँ पे आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो. एंड आपको एक हमेशा एक रिप्रेजेंटेटिव असाइंड रहेगा जिसको आप कभी भी फोन करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, या आपको कुछ भी ट्रबल हो रही थी यू कैन जस्ट रीच आउट टू देम कि हेलो, हेलो मिस्टर एबीसी, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा स्टॉक सेल नहीं हो रहा है, मेरी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है एंड सो ऑन. सो सम एग्जांपल्स ऑफ फुल सर्विस ब्रोकर्स आर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल. तो ये सब जो स्टॉक ब्रोकर्स है, इन सब के ऑफिसेज आपको अपनी सिटी में मिल जाएंगे. लाइक एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई का तो उनके बैंक से ही लिंक्ड रहते हैं. सो यू कैन एनी टाइम विजिट द बैंक इफ यू हैव एनी डाउट्स. देन ओल्ड प्लेयर्स लाइक मोतीलाल ओसवाल एंड देन वी हैव आनंद राठी. तो उन सबके ऑफिसेज भी रहते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली विजिट अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो. सो दैट इज एन एडवांटेज फॉर ट्रेडिशनल ब्रोकर्स. देन वी हैव डिस्काउंट ब्रोकर्स, जो कि जिनका मेन फोकस रहता है सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में. एंड इट इज फॉर दोज पीपल हु आर नॉट न्यू एंड वेल वर्स, कि जो अपने खुद डिसीजंस ले सकते हैं कि मुझे क्या बाय करना है, मुझे क्या सेल करना है, एंड डोंट रिक्वायर एनी असिस्टेंस. सो discount brokers' main focus is to provide a platform for you to trade securities in stock exchange and charge a commission or brokerage for it. The advisory and consulting element is not included in discount broker services. तो कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर आपको एडवाइजरी या कंसल्टेंसी नहीं दे सकता है. दे विल जस्ट ऑफर यू अ टर्मिनल, दे विल जस्ट ऑफर यू एन एप्लीकेशन की इसमें आप बाय या सेल कर सकते हो, या आप दूसरी चीजें कर सकते हो. लाइक यू कैन अप्लाई फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, और यू कैन परचेज एंड सेल म्यूचुअल फंड्स. ओके. सो मेजर चेंज डिफरेंस जो रहेगा डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड ट्रेडिशनल ब्रोकर्स में, डेट विल बी फी. जो डिस्काउंट ब्रोकर्स रहते हैं इनका नाम डिस्काउंट ब्रोकर इसलिए पड़ा है क्योंकि दे आर नॉट ऑफरिंग दिस एडिशनल सर्विसेज एंड इनकी फीस देन बहुत नॉमिनल रहती है, क्योंकि इनको सिर्फ अपने एप्लीकेशन का खर्चा निकालना है. दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग वन एप्लीकेशन टू ट्रेड ऑन. सिर्फ तो उसी के हिसाब से फीस लेंगे एंड दे चार्ज वेरी नॉमिनल फी. वेयर एज ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जो रहते हैं वो थोड़ी हायर फी चार्ज करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द सर्विसेज दे आर ऑफरिंग. एंड दैट कुड नॉट बी पॉकेट फ्रेंडली अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है. लाइक इफ यू आर ट्रेडिंग यूजिंग 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो दो एडिशनल फीस, मतलब वो एक एक परसेंट फी भी चार्ज करेंगे तो इट मेक्स अप टू अ ह्यूज अमाउंट. ओके. वेयर डिस्काउंट ब्रोकर्स में ऐसा नहीं रहता है. दे चार्ज वेरी नॉमिनल, वेरी नॉमिनल फी. कूल.
Yeah. So let's continue. So you were clear with discount brokers? कुछ डाउट तो नहीं रहा उसमें, डिस्काउंट और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स? No, sir. Hello, sir. I'm here. हाँ, okay. So let's move on. Then we have third topic, which is insurance brokers. So similarly, like real estate broker, insurance broker are the person who are going to help you in purchasing insurance policies and going to tell you what will be the best policy आपके जो plans के लिए, आपके जो requirement है उसके लिए. Broker is someone who assists you while choosing the best insurance policy. These are individuals with access to hundreds of policies and their extensive research. They advise you on best value policy for your requirements. An insurance broker can also prepare customized insurance and risk mitigation policies in accordance with your goals and risk appetite. तो जो भी इंश्योरेंस ब्रोकर रहेगा, we have Star Insurance, we have Bajaj Finance, Bajaj Health Insurance and other things, other companies. तो जो भी इंश्योरेंस ब्रोकर रहेगा, he will have टाई अप विद ऑल दोस कंपनीज कि एंड वेन एवर यू रीच आउट टू देम, आप उनको बताओगे कि मेरा रिस्क एपेटाइट इतना है कि आई एम विलिंग टू पे 20-25,000 पर ईयर एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा 5-7 लाख का कवर हो जाए सारे हॉस्पिटल के बिल्स. तो ही विल टेल यू विच इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर यू एंड आप क्या, आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड व्हाट आर द हिडन चार्जेस एंड एवरीथिंग. एंड ऑल्सो अगर आपको बहुत कस्टम प्लान चाहिए कि यार मेरी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स है तो मैं चाहता हूँ इतना कवरेज मिल जाए मेरे को एंड सो ऑन, आपकी फैमिली में किसी को कुछ बीमारी है तो ये दे कैन प्रिपेयर ए कस्टम इंश्योरेंस प्लान फॉर यू एंड जिसमें आपकी सारी पॉइंट्स मीट आउट हो जाए. तो जो इंश्योरेंस ब्रोकर रहते हैं दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट यू विल सी ऑफलाइन एजेंट्स जो आपको आपके for you term insurances, term insurance, medical insurance, and others. Then we have online medical insurances like पॉलिसी बाजार, एक्को, जिनकी एडवर्टीजमेंट आप हमेशा देखते रहते होंगे. तो नो, ओके, लेट्स गो. या सो दिस आर सम एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर्स. वन इज प्रोबस, आपका सारथी जिसका ऋतिक रोशन ब्रांड एंडोर्स करते हैं. देन वी हैव टर्टल मिंट जिसको एम एस धोनी साहब एंडोर्स करते हैं. देन वी हैव फॉरेक्स ब्रोकर्स. तो फॉरेक्स ब्रोकर जो रहते हैं, लाइक द फॉरेक्स वर्ड इज फॉर फॉरेन एक्सचेंज. लाइक आपको अगर फॉरेन करेंसी में जो भी डीलिंग करनी रहती है, यू नीड टू गो टू फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स. तो जो फॉरेक्स ब्रोकर्स रहते हैं दे कुड बी ऑफ टू टाइप. एक तो जो स्टॉक ब्रोकर्स रहते हैं, दे कैन ऑल्सो ऑफर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, और वी कैन हैव सम इंडिविजुअल फॉरेक्स ट्रेडर्स ब्रोकर्स जो सिर्फ फॉरेक्स से काम करते हैं. ओके. सो फॉरेन और जो फॉरेक्स के ट्रांजेक्शन रहते हैं दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड फेमा. वी हैव आरबीआई एज इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडिया के सेंट्रल बैंक है, वो भी फॉरेक्स ट्रांजेक्शन रेगुलेट करती है. देन वी हैव फेमा विच इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो भी जो कि रेगुलेट करता है कि आप क्या फॉरेन ट्रांजेक्शन कर रहे हो. इट इज अ लॉ, सो वी वोंट स्टडी दैट इन डिटेल एज ऑफ नाउ. सो द वर्ड फॉरेक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन एंड एक्सचेंज. This that facilitates the exchange of a foreign currency, like that's so obvious. Then we have forex brokers provide you with a platform to buy and sell foreign currency in the capital markets. Like you can buy any foreign currency from foreign exchange broker. It could be US dollar, it could be Pakistan rupee, it could be Australian dollar, Canadian dollar, euros, ruble, yen, anything you can buy. Like you can buy rupee as well on forex. Okay. Then we have transactions in forex market are done in a duet manner. That is, a pair of two different currencies are either bought or sold at the same time. तो
फॉरेक्स में हमेशा ट्रांजेक्शन डुएट मैनर में होंगे कि लाइक यू विल बी ऑलवेज सेलिंग वन करेंसी टू परचेस अनदर करेंसी। आप आईएनआर देके आईएनआर नहीं खरीद सकते हो। यू नीड टू बाय डॉलर एंड सेल इंडियन रुपी, और इफ यू बाइंग इंडियन रुपी यू नीड टू सेल डॉलर, और यू नीड टू सेल येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, वॉट एवर यू आर सेलिंग। To most forex broker cater to retail clients. However, when they are linked with a banking parent body, they also serve institutional clients. Common currencies traded with forex brokers are USD INR, USD Euro, USD Japan, like USD N, and then and every other in between. Okay, so यूजुअली फॉरेक्स ब्रोकर्स जो रहते हैं उनका मेन टारगेट रिटेल क्लाइंट्स रहता है, बट अगर आप बैंक को अपना एज अ फॉरेक्स ब्रोकर एम्प्लॉय करोगे तो दे आर ऑल्सो दे विल ऑल्सो बी हैविंग इंस्टीट्यूशंस एज क्लाइंट। तो हो सकता है कि वो आपको इतना फेयर रेट ऑफर नहीं करे। लाइक अगर यूएस डॉलर टू आईएनआर चल रहा है 82 रुपीज का एक्सचेंज रेट, 1 डॉलर विल फैच यू 82 रुपीज। तो हो सकता है कि बैंक आपको 85-86 रुपीज तक सेल करे, वेयरएज लोकल ब्रोकर्स पे आपको थोड़ा इजी एक्सचेंज मिल जाएगा एंड नियरेस्ट टू द एक्चुअल रेट मिल जाएगा। लाइक $82 चल रहा है तो सॉरी 82 रुपीज चल रहा है तो यू माइट गेट 82.5 और 83। एंड अगर आप सिर्फ करेंसी एक्सचेंज कराना चाहोगे तो यू हैव प्लेसेस लाइक एयरपोर्ट जहाँ पे आप चेंज करा सकते हो, बट वहाँ पे भी अनफेवरेबल रेट रहता है अपने लिए, आपको महंगा पड़ेगा हमेशा ऐसी जगह पे। सो ऑलवेज ट्राई टू रीच अ लोकल ब्रोकर और ऑनलाइन फॉरेक्स ब्रोकर जहाँ पे आपको थोड़ा इजीली और सस्ते रेट पे करेंसी स्वैप हो जाती है। ओके, एनी डाउट इन फॉरेक्स ब्रोकर? ऑल गुड, ओके। सो लाइक देन ब्रोकर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। फाइल सबमिट sum up stock brokers again to you. We have two type of stock brokers. One is traditional brokers, and then second we have full service brokers. तो जो ट्रेडिशनल ब्रोकर रहते हैं दे ऑफर यू फुल बंडल सर्विसेज, जहाँ पे आपको कंसल्टेंसी भी मिल जाएगी, उनका ऑफलाइन ऑफिस भी मिल जाएगा, एंड यू कैन ऑब्वियसली डू दैट थिंग कि अगर आपका एप्लीकेशन यूज नहीं करनी है तो आप अपना हमेशा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को फोन करके बोल सकते हो कि सर परचेज रिलायंस ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी मनी रखा हुआ है, यू कैन गो एंड परचेज फ्रॉम दैट मनी। और you can directly use their application, and also traditional brokers will offer you consultancy services if you're completely do. They will provide a more user friendly interface to you because it is created for just system and mobile applications, तो उनके applications बहुत यूजर फ्रेंडली रहेगी एंड बहुत सारा डेटा अवेलेबल रहता है उनके applications में, and it will be easy to use for you, and they will charge minimal fees to you. Okay, so those were type of stock broker. Market indexes. So do you want to, like, do you know any index of India we discussed in previous classes? Okay, I'll assume silence says no. So I'll start with the definition. A stock market index measures the performance of a group of stock that represents a particular section of the stock market. तो जो भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स रहता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का या सेक्टर का एक रिप्रेजेंटेशन रहता है, जो कि उनके एक समरी शो करता है कि हाउ दैट सेक्टर और सेगमेंट इज डूइंग। सो इसका पर्पस क्या रहेगा? प्रोवाइड्स एन ओवरऑल इंडिकेशन ऑफ द मार्केट परफॉर्मेंस ऑफन यूज्ड एज अ बेंचमार्क बाय इन्वेस्टर्स। तो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस का ओवरव्यू दे देता है कि ओके ये सेक्टर ऐसा कर रहा है और या तो ये कंट्री ऐसा कर रही है, एंड इट विल बी अ बेंचमार्क बाय इन्वेस्टर्स कि वो उसको देख के पूरा आइडिया लग जाएगा उनको कि ओके दिस इज हाउ दैट कंट्री और पर्टिकुलर सेगमेंट इज डूइंग। कि अगर उनका स्टॉक मार्केट इंडेक्स या उनके कोई सेक्टर का इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो दैट सेक्टर और द कंट्री इज परफॉर्मिंग रियली वेल, वहाँ की जीडीपी अच्छी है, द कंट्री इज स्टेबल, वहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का अच्छा मनी इनफ्लो हो रहा है। एंड इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट गुड, वहाँ पे ये मान के चलेंगे कि द कंट्री इज नॉट डूइंग वेल, देयर कुड बी सम इंटरनल ट्रबल्स और द कंट्री माइट बी इन अ वॉर, और इट कुड बी एनी रीजन। वहाँ पे रिसेशन चल रहा हो सकता है, वहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकता है,
So you need to be cautious while investing in those sectors or countries. Okay. So for example, we have Sensex, जो कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का. एंड देन वी हैव निफ्टी 50 विच इज अ index of India's largest 50 companies from National Stock Exchange. Okay. Then what is the importance of a stock market index? तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो रहता है इट्स मार्केट की हेल्थ इंडिकेट करता है. इट हेल्प्स टू ट्रैक द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी. आप किसी भी कंट्री का इंडेक्स देख के बता सकते हो कि हाउ दे आर डूइंग and how if their economy is doing good or they are struggling. Like if you go by Nifty 50, तो जो Nifty 50 इंडेक्स है इट इज ग्रोइंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 15% पर ईयर. तो आप बता सकते हो कि इसके थ्रू कि इंडिया कई सालों से अच्छी ग्रोथ कर रहा है. कंपेयर टू एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग गोइंग अप एंड अप. सो इट shows how is the market health. And then it is a benchmark for investors. Investor use indices to compare the performance of their portfolio. So what we can do is like अगर मुझे आज पता चल गया कि निफ्टी 50 जो है हर साल 15% ग्रो हो रहा है, तो आई कैन सेट इट एज अ बेंचमार्क कि जो मेरा पोर्टफोलियो है वो एटलीस्ट हर साल 15% तो ग्रो होना ही चाहिए. इफ आई एम नॉट एबल टू ग्रो माई पोर्टफोलियो बाय मिनिमम 15% एवरी ईयर, आई एम अंडर परफॉर्मिंग द इंडेक्स. कि मुझसे नहीं हो पा रहा है अच्छे से पोर्टफोलियो मैनेज, तो व्हाट आई डू इज आई विल डायरेक्टली इन्वेस्ट ऑल द मनी इन इंडेक्स फंड ताकि मुझे एटलीस्ट 15% का बेयर मिनिमम रिटर्न मिल जाए. एंड इफ आई एम आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50, दैट इज आई एम आउट परफॉर्मिंग इंडिया बेंचमार्क इंडेक्स, I am good in investing and I am making really good decisions. Cool. And we have sector specific trends. I'll just wait for 5 minutes. Tanisha just left the class. I'm so Yeah. sorry for this problem, sir. So then we have. Oh no, no, no problem. कहाँ तक सुना था आपने? Sir, Nifty Like 50, the bench. about the Nifty 50 has top companies in India performing well. Okay, okay. So like stock market index को investors can set as a benchmark. कि सो आई गिव एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी 50 कि अगर निफ्टी 50 हर साल 15% ग्रो हो रही है, तो कोई भी इन्वेस्टर उसको एक बेंचमार्क बना सकता है कि ओके मेरा पोर्टफोलियो जो है जितने पैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ स्टॉक मार्केट में शुड ग्रो एटलीस्ट बाय 15% एवरी ईयर. कि मेरा पैसा हर साल 15% ग्रो होना चाहिए. अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आई शुड इन्वेस्ट दोस मनी इन वी कैन से इंडेक्स फंड जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं. देयर आर सम म्यूचुअल फंड्स जो डायरेक्टली निफ्टी 50 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं. सो यू कैन गिव मनी टू देम कि भाई तुम ये पकड़ लो, क्योंकि आई एम अनेबल टू आउट परफॉर्म. मतलब मैं 15% से ज्यादा तो नहीं कमा पा रहा हूँ एंड मैं लो आई एम अर्निंग लेस देन 15%. लाइक आई एम अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क. सो आई विल इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड. बट अगर मैं 15% से ज्यादा कमा रहा हूँ so that means I am a really smart investor or a trader. And I'll keep continue my trading and investing. Okay. Then we have sector specific trends. So sector specific indices track the performance of sectors such as technology, energy, or banking. For example, okay, then we have sector specific trends. लाइक जैसे मैंने निफ्टी 50 बताया तो वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है. बट वी हैव मैनी इंडेक्सेस लाइक दैट कि वी हैव निफ्टी 500 जो कि निफ्टी 5 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो टॉप 500 कंपनीज लिस्टेड है उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है. एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दोज. देन वी हैव निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब जो इंडिया की सबसे 50 बड़ी कंपनी है वो निफ्टी 50 का पार्ट है. देन वी हैव निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब उसके बाद जो 50 कंपनी सबसे बड़ी है दे कम इन निफ्टी नेक्स्ट 50. देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स लाइक वी हैव निफ्टी ऑटो. देन वी हैव निफ्टी रियल एस्टेट. सो निफ्टी ऑटो क्या होता है, जो जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उसका एक क्यूमुलेटिव इंडेक्स है. देन वी हैव निफ्टी रियल एस्टेट जहाँ पे सारी रियल एस्टेट कंपनीज साथ में आ जाती है. देन वी हैव निफ्टी फार्मा, वी हैव निफ्टी आईटी. मतलब हर सेक्टर का एक इंडेक्स बना हुआ है. इफ यू वांट to track performance of that particular sector,
तो आप उसका इंडेक्स चेक कर लो। तो फॉर सपोज आपको आईटी स्टॉक्स कैसा कर रहे हैं, सारे जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स होते हैं, सारे टेक स्टॉक जो होते हैं, उनको चेक करना है कि आर दे डूइंग गुड। लाइक यूएस इज करेंटली स्ट्रगलिंग, वहां पर रिसेशन चल रहा है, तो इंडिया में आईटी स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके मेजर क्लाइंट्स आउटसोर्सिंग से ही आते हैं, लाइक दे वर्क फॉर फॉरेन क्लाइंट्स। तो यू कैन चेक द आईटी इंडेक्स विच इज निफ्टी आईटी, एंड उसमें चेक कर सकते हो कि क्या वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है या वो लो पे ट्रेड कर रहा है। जितने रिटर्न उसने लास्ट ईयर्स में दिए, क्या वो इस साल भी इतना रिटर्न दे पा रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन कीप आई ऑन सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड्स। एंड अगर आपको ट्रेंड्स का नॉलेज रहेगा तो यू कैन रोटेट योर मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। लाइक इफ योर मनी इज इन्वेस्टेड इन फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स, तो आपको 2020 में उसमें बहुत बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि कोविड के कारण फार्मा स्टॉक्स गेव अ ह्यूमंगस रैली, क्योंकि सारी मेडिसिन वगैरह बहुत डिमांड में थी। देन आफ्टर दैट जैसे ही कोविड खत्म हुआ, देयर वर लॉट ऑफ बूस्ट इन ऑटोमोबाइल सेल्स, गाड़ियां बहुत ज्यादा सेल हुई है। तो तब आपने सेक्टर स्विच करके अगर ऑटो फार्मा से निकाल के ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाल दिया होगा, तो यू वुड हैव मेड अ गुड चंक ऑफ मनी। देन वी हैड रैली इन ऑयल एंड गैस, तो अगर आप निफ्टी एनर्जी में पैसा डाल देते हैं, लाइक जहाँ पे एनर्जी स्टॉक्स लिस्टेड है सारे, वहाँ पे ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स होंगे, पेट्रोलियम स्टॉक्स होंगे, तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। सो इफ यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स एंड स्विच योर मनी, देन you can make good money out of markets. For an example, a rise in Nifty 50 indicates that the top 50 companies in India are performing well. तो इंडिया की अगर टॉप 50 कंपनीज परफॉर्म कर रही है, तो उसमें कोई पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी नहीं होगी। इट विल हैव कंपनीज फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स जो कि टॉप पे है। तो लाइक वी विल हैव रिलायंस व्हिच इज a top company in petroleum sector and telecom sector. Then we will have HDFC Bank, State Bank of India, जो कि बैंकिंग सेक्टर की सारी सबसे टॉप कंपनीज है। Then we will have what we say, petroleum companies like IOC in Nifty 50. Then we will have IT companies like Tata Consultancy Services in Nifty 50 because they are top in IT sector. Then we will have metal companies like Tata Steel जो कि मेटल में काम करते हैं in Nifty 50. So it will be benchmark index after combining top 50 companies of India. So you will get a broader idea कि इंडिया की इकोनॉमी कैसा कर रही है। Then second example is a decline in Nifty auto index indicates that automobile companies are struggling. सो डिक्लाइन इन ऑटोमोबाइल इंडेक्स, लाइक आपको पता चल जाएगा कि ओके यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। इट कुड बी ड्यू टू इन्फ्लेशन, हो सकता है कि कार्स बहुत महंगी हो गई तो लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। या हो सकता है कि देयर आर नॉट मच इनोवेशंस अवेलेबल इन द मार्केट, या there could be any reason ki because of higher taxes or higher fuel prices, people have stopped purchasing new vehicles and they are using public transports more. So it could be any reason in decline. There could be any reason which might lead a decline in index. Okay. So importance of stock market index is clear. Sir, actually, I have a doubt in the benchmark for investors. Can you please repeat that again? Yeah, sure. So benchmark for investors is like अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यू विल क्रिएट एन एक्सपेक्टेशन कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए। अगर इफ यू आर डिपॉजिटिंग योर मनी इन फिक्स डिपॉजिट जो एफडी होती है, उसमें आपको 7% का रिटर्न मिलेगा ही, करेक्ट। तो आप उसको एक बेंचमार्क बना सकते हो कि अगर मैं बहुत पैसिव इन्वेस्टर हूँ, सो यू हैव मेक आपने एफडी को एक बेंचमार्क बना दिया है कि मुझे एटलीस्ट 7% रिटर्न चाहिए अगर मैं स्टॉक मार्केट में कमा रहा हूँ। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज इफ यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, तो आप क्या करोगे, आप किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स को एक बेंचमार्क बना दोगे। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स में आपने जैसे देखा कि निफ्टी 50 को मैंने बेंचमार्क बना दिया, जो हर साल 15% का रिटर्न देती है ऑन एन एवरेज। कभी हो सकता है कि 10% दिया, किसी साल 20% दिया। बट आप जब आप इन्वेस्टर हो तो आप 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आप 5 साल का उसका एवरेज रिटर्न देखोगे तो 15% रहता है। तो आपने उसको क्या करा, उसको एक बेंचमार्क बना दिया कि मेरा पोर्टफोलियो जो है, जो मेरे 50 लाख रुपए हैं, वो हर साल मिनिमम 15% से तो ग्रो होने चाहिए, वरना मैं खुद से जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका मतलब ही क्या है। मैं सीधे इंडेक्स में पैसा लगा देता हूँ। तो दैट इज अ बेंचमार्क
कि एक इन्वेस्टर को वो बेंचमार्क बन गया है कि एक उसने लेवल सेट कर दिया है कि एटलीस्ट मैं इतना तो ग्रो करूं हर साल। एंड वो अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस फिर उससे कंपेयर करेगा कि मेरे 50 लाख मेरे 2 साल पहले स्टॉक मार्केट में खुद से लगाए थे, तो अब वो 100% का रिटर्न दे रहे हैं। बट अगर मैं उसको सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता या किसी और इंडेक्स में इन्वेस्ट करता, फॉर सपोज निफ्टी ऑटोमोबाइल में, तो अगर वो मुझे 2 साल में 40% रिटर्न दे देती है, तो मैंने उनको 60% से ज्यादा आउट परफॉर्म कर दिया, मतलब मैंने उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Thank you. ओके, थैंक यू। then let's move forward. Then we have how index are calculated. अब अपन ने इतनी सारी बात तो कर ली कि इतने टाइप के इंडेक्स होते हैं, ये फलाना ढिमका, बट उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, तो उसको हम वो समझते हैं हम। जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स होते हैं, यूजुअली उनमें दो मेथड होती है कैलकुलेशन की। फर्स्ट मेथड इज मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड, देन वी हैव प्राइस वेटेड मेथड। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथड होती है, उसमें हम जितने भी टॉप 50, जैसे अभी हम निफ्टी 50 को एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने निफ्टी 50 लिया है, तो उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, करेक्ट? तो टॉप 50 कंपनीज में ऐसा तो होगा नहीं कि सारी कंपनी इक्वल है। किसी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। उस उन 50 कंपनीज में भी वी विल हैव रैंकिंग, राइट? 1 2 3 4 5 6 करके। तो ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी है। तो जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी रहेगी, उसको हम एक वेटेज दे देंगे। सो फॉर सपोज मैंने यहाँ पे चार्ट अटैच करा है, तो ये निफ्टी 50 की कुछ कंपनीज का वेटेज है, फ्रॉम सॉर्ट करा है मैंने हायर टू लोअर में। तो ऑन फर्स्ट वी हैव एच डी एफ सी बैंक, जो सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। तो उसका वेटेज 11% है निफ्टी 50 में। देन वी हैव रिलायंस, जिसका 9% है। वी हैव आईसीआईसीआई बैंक, जिसके 7% है। तो इनका प्राइस मूवमेंट जब भी कुछ होगा, तो वो निफ्टी का 11% का हिस्सा मूव कर सकता है। ओके, लाइक निफ्टी 50 की 50 कंपनी को मिलाएंगे तो उसका टोटल 100 होगा, करेक्ट? कि 50 कम, हम परसेंटेज टर्म्स में जब डिसाइड करते हैं कोई भी चीज, तो वो 100% होती है, करेक्ट? ओके, तो वो 100% में से 11% एच डी एफ सी बैंक के पास है, 9% रिलायंस के पास है, 7% आईसीआईसी बैंक के साथ है। तो stocks with high market capitalization have a greater impact on the index. तो जब 100% में से 11% एच डी एफ सी बैंक लेके बैठा हुआ है, तो एच डी एफ सी बैंक में जब भी कुछ मूवमेंट होगा, तो वो इंडेक्स में ज्यादा मूव करेगा। फॉर सपोज अगर एच डी एफ सी बैंक 1 रुपीज से बढ़ेगा, तो हो सकता है इंडेक्स आपका 2 या 3 रुपीज से बढ़ जाए, कि उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। वेरेस अगर आप यहाँ पे सबसे आखिर में देखोगे, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा दिख रही है, जिसका वेटेज 2.62 रुपीज है, 2.62% है, सॉरी। तो हो सकता है कि जब वो 1 रुपए उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो इंडेक्स को सिर्फ 0.5 रुपीज बढ़ा पाएगा। बट जब कोई इंडेक्स हैवी वेट मूव करता है, लाइक एच डी एफ सी बैंक या रिलायंस, तो वो मार्केट को बहुत हायर लेवल पे मूव कर सकता है। ओके, सो मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट मेथड इज क्लियर फॉर यू Yes, ऑल्सो? sir. ओके ओके, कूल। देन ऑन सेकंड वी हैव प्राइस वेटेड। तो स्टॉक्स विथ हायर प्राइस हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द इंडेक्स। तो इसमें क्या होगा कि जिन स्टॉक्स की प्राइस कम है, दैट विल हैव अ हायर इम्पैक्ट। सॉरी, जिन स्टॉक्स की प्राइस ज्यादा है, उनका ग्रेटर इम्पैक्ट होगा। तो ये जो मेथड है बहुत कम, मतलब कहीं पे भी यूज नहीं होती है, एज फार एज आई नो, क्योंकि ये इतना सेंस नहीं बनाते कि जिसका स्टॉक सबसे ज्यादा महंगा है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट। तो मान लो जैसे एमआरएफ का जो स्टॉक है वो 1,50,000 रुपीज का एक है, अगर वो हिलेगा तो इंडेक्स हिल जाएगा, तो दैट वोंट मेक मच सेंस। तो प्राइस वेटेड मेथड सिर्फ एक बुकिश डेफिनेशन है कि दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इंडेक्स, but price weighted method is not used as much to calculate to in index. Okay, price weighted is clear. Yes, sir. Okay, okay, then yeah, so this was all about topics for the today. For today we'll have a 2 3 questions. Any doubt in any of the topic, you can ask. No, sir, no doubt. Yeah, and those who will be watching it offline, do reach out if you have any doubts. Okay, you can ask on WhatsApp, or you can ping me, or you can join next session and we can have Q&A. So, first question, which of the following best describes the stock market index? Can you try to answer? Sir, option A.
Are you sure? I am asking about stock market index, not stock exchanges. So the correct answer will be B, a measure of the performance of group of stocks, जहाँ पर हम चेक करेंगे कि कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी है. आपने जो ए आंसर दिया इट इज फॉर स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर वी ट्रेड स्टॉक्स. इज इट क्लियर? Yeah, actually, I got a bit confused in option A and B. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. अभी क्लियर हो गया ना? शुड आई रिपीट? No, sir, it's clear now. Then yeah, the Sensex is an index that tracks. Option D, the last one. No, no. The top 50 companies जो listed. ऑप्शन डी है ना, इट इज फॉर निफ्टी 50 जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है. सेंसेक्स जो इंडेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है एंड इट ट्रैक्स टॉप 30 कंपनीज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लाइक हियर वी डिस्कस की एग्जांपल्स में यू कैन सी इंडियाज लार्जेस्ट 30 कंपनीज. ओके, एंड इट इज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स. ये मतलब प्रीवियस Can you क्लास में please बताया था. explain the difference between say, Sensex and Nifty 50? No, so like we have two type of stock exchanges in India. One is BSE, that is Bombay Stock Exchange. Then we have NSE, National Stock Exchange. Okay, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक अलग बिल्डिंग में है पूरा एंड देन वी हैव नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो जरूरी नहीं है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्टेड है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी होगी. ओके, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है लाइक इट वाज फॉर्म्ड इन 1875 और समथिंग. तो बट अब कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि जो टॉप 30 कंपनीज है बॉम्बे बीएससी की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, दे आर कॉमन विथ टॉप 50 कंपनीज ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो जो इंडिया की लार्जेस्ट 30 कंपनीज है उसका इंडेक्स बनाया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों ने और उसको उसका नाम दिया है सेंसेक्स. ठीक है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वालों ने इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स बनाया है, उसको नाम दिया उन्होंने निफ्टी 50. सेंसेक्स का पूरा नाम वैसे सेंसेक्स 30 है लाइक प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस्ड इट. सो इज इट क्लियर? Yes, sir, now it's clear. ओके ओके, cool. Which type of broker provides research, advice, and portfolio management services? So it will be full service broker or we can say traditional brokers जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो सारी आपको रिसर्च एंड एडवाइस की सर्विसेज भी देगा एंड दे विल ऑफर यू टू मैनेज योर पोर्टफोलियो एज वेल. ओके, then yeah, these were the three questions. Like if you have any doubt in any of the topic, we can discuss, or otherwise you can end the class. It's all clear, sir. All clear? Okay, cool. Yeah, that was Thanks. all for this class. Then let's meet on next class. I think that will be on Monday. So let's meet on Monday. Okay. Yep. Good Have a night, sir. happy weekend. Bye bye. Same to you, sir. Yeah. Bye.